Sallimu Taslima. Dear viewers and listeners of Ramadan Radio Wolverhampton, this is your host, Dr. Gillani, with Health Clinic. This very sunny, warm summertime evening. We had various topics in Health Clinic so far, and if you remember back in Ramadan, we brought some guests here to talk about COVID-19. This is again the same topic we are bringing with a slightly different angle because we have gone past that peak of the pandemic so far. And I thought it would be good that if we remind ourselves what we have gone through, and that will also give us an opportunity to speak with some experts in their fields to know where we are and what we need to do next and how we are predicting the pandemic will happen. This program will be in two languages, English and Urdu, and we will go side by side, and both of our experts will give their own perspective of the questions which we will be going through. And I think it would be helpful if you are bilingual. It would perhaps help you to listen to the whole program because of the various perspectives of the two guests which we have in our program today. Just to remind all the viewers, if you are viewing this live on the Facebook, you can contact us by the details which are in front of you on the Facebook. Similarly, if you are listening to us online via our website, ramadanradiowolves.com, you can send us a text message via WhatsApp, and our number is 07440 420 432. You can also send us a voice memo if you need to ask a question. Similarly, if you are in United Kingdom and you want to ring the studio, our studio number is 01902 972 150. So do feel free to ask questions from our experts whom I'm just going to introduce. I think I'm extremely grateful that these two experts have agreed to give their very precious, valuable time to my program. And I'll, without any delay, introduce my first guest, who is Dr. Dinesh Saralai. He is a consultant in respiratory medicine at Bradford Teaching Hospital with over 15 years of experience. And I think his particular interest is in respiratory research. He is the head of the Respiratory Clinical Trial Unit at Bradford Institute of Health Research and is also Associate Director of Research at BIHR. He has a national advisory role and is leading the COVID clinical trials at Bradford Royal Infirmary. Very warm welcome to Dr. Dinesh Saralai. Thank you, Dr. Gillani. My second speaker is Dr. Abid Aziz. Dr. Abid Aziz is, again, a consultant in respiratory medicine in Bradford Teaching Hospital for more than 10 years. And he's the respiratory specialist leads and is involved in the redesign of the respiratory service in Bradford. And he was the direct in charge of the COVID ward throughout the pandemic. And he appeared in BBC North Midlands as well during the peak of this pandemic. So very warm welcome to Dr. Abid Aziz. Thank you, Dr. Gillani. If I can just sort of go through how we will run, I think what we will do is that we will ask a question to Dr. Saralai in English, and I perhaps will ask the similar question to Dr. Abid Aziz, who will respond to us in Urdu. तो मेरे वो तमाम लिसनर्स जो कि इस वक्त प्रोग्राम सुन रहे हैं उर्दू ज़बान में, मैं आपको बताता चलूं कि आज जो हमारे साथ दो गेस्ट मौजूद हैं, वो गेस्ट हमारे साथ रहेंगे और हमारे साथ बातचीत उनकी जारी रहेगी. हम लोग कुछ सवाल इंग्लिश में करेंगे, उनके जवाब उर्दू में इंग्लिश में दिए जाएंगे, और फिर उसी तरह का सवाल मैं उर्दू में करूंगा जिसका जवाब हमें डॉक्टर आबिद अजीज़ उर्दू में देंगे. तो प्रोग्राम का आगाज़ बाकायदा तौर पे करता हूं मैं. तो प्रोग्राम के अंदर मैं सबसे पहला सवाल जो है वो मेरा ख्याल में डॉक्टर सारालाई से स्टार्ट करता हूं. डॉक्टर सारालाई, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन. आई जस्ट वांट टू स्टार्ट दिस प्रोग्राम asking if you can describe your experience of managing COVID patient
and how it has changed over the last 3 months. It has clearly changed our lives. Uh, and we have seen the hospitals gone through the peaks, and the hospitals are breathing better at this time. Can you share your experience of how did it go? Thank you, Dr. Gillani. So, COVID 19 is caused by the SARS CoV 2 virus. It's an RNA virus, and we first heard about this the beginning of this new year of a pandemic, which was not a pandemic at that time, a viral illness breaking out in the city of Wuhan in China. I must say, many of us were thinking that this was a problem in China, not knowing that in 3 months' time we would be faced with a similar crisis. So throughout the media and news channels, we were seeing people coming to harm and dying from COVID 19 in China. And towards February end, the WHO confirmed that this was a national emergency, international emergency, sorry, and a pandemic. And quickly it engulfed Italy, Spain, and France, and reaching our shores in a rather severe manner, initially very mild in February, when our first case was reported actually end of January. And then we were certainly in the patch that we work at Bradford, which is in West Yorkshire, in the north of England, started seeing our first case of COVID 19 on the 14th of March 2020. Within a couple of weeks, we had to redesign our entire service, and I'm sure Dr. Aziz will also shed light into that matter, that we had to convert three of our medical wards into what we call COVID red wards, anticipating that we would have a surge of admissions. And within 2 to 3 weeks, around the weekend of the Good Friday, the Easter weekend, and about 2 weeks before the onset of the fasting month, Ramadan, holy month, we started seeing a lot of cases with COVID 19, and our wards were completely full. At one particular time, we had over 150 patients with COVID 19 occupying our bed base, which is roughly about 700 beds at Bradford Teaching Hospitals. It also called a halt to most of our other non COVID activity. And a team of respiratory physicians, which was headed by Dr. Aziz, were called in to manage these patients. Now, early in the pandemic, I was drafted into a national committee, which was called the Urgent Public Health Badging Committee, because of my research interests in asthma and because I have a national role within the National Institute for Health Research. We decided that any experimental medicine, so people were hearing about the anti-malarial drug called hydroxychloroquine, antibiotics, steroids, all being used in China, but none of them were actually controlled in a trial. None of them had scientific basis. So we decided in the UK that this any new experimental drug was going to be part of a clinical trial. And the research community in the UK drafted three what we call platform trials. They were all urgent public health badged, and the whole workforce of the research teams across the NHS were galvanized to deliver into these trials. One such trial was the recovery trial, which today is the largest COVID 19 trial ever to happen in the world. Many of you would have seen the headlines of it finding the first drug of promise in COVID 19 last week, the drug called dexamethasone. COVID 19, the recovery trial was led from the University of Oxford, but over 170 centers, including our own center, are participating in this trial. The trial is not over. It's recruited over 11,800 patients at the moment, hoping to recruit 15,000 and above, and probably going to run in the new year, and would probably answer your question on what post COVID and the next wave, if we have one, is going to look like, because we are doubling our efforts in finding further cures for COVID 19. So the research into COVID 19 certainly focuses on the recovery trial, but there are various other trials which are finding a cure for COVID 19, 48 in total, 48 in total, which will ultimately answer, because the cure for COVID 19 is not going to rely on a single drug. Yes, dexamethasone is going to be the platform drug upon which we'll build two or three medicines or drugs, either given in a tablet form or in the form of an injection, which will ultimately cure our patients. Because as you will know, people are dying from this dreadful virus, and we need to call a halt to that. And the research community is working overdrive along with clinicians. I must say, even clinicians like Dr. Aziz have supported recruitment of patients into the recovery trial. In Bradford, we've recruited over 140 patients into the recovery trial, the largest number recruited in Yorkshire. But for your listeners to know, 45% of these patients belong to the Asian background, from
the Asian community that we serve in Bradford, which are predominantly from Pakistan, India, and Bangladesh, which is a great credit to our organization. And a large proportion of these patients received that magic drug, which we call dexamethasone, which has proven that in oxygen dependent patients reduces mortality by 20%, and in patients on a ventilator saves lives by a third. So, yes, the ongoing effort to find a cure for COVID 19 is very much on. At the moment, we're trying a drug called tocilizumab, which is given in the form of an injection. And we're using the blood of people who have recovered from COVID 19, using the antibodies in their blood called convalescent plasma. And we have just randomized our first patient in Bradford, which means the first patient in Bradford has taken part in this trial from a donor of somebody who's recovered from COVID 19. And we have to thank that patient and the various patients who are donating their blood to find a cure for this dreadful disease. Thank you. And I think this is obviously of a huge interest to public when it hit the headline last week that the dexamethasone, as a part of recovery trial, has been shown to be very effective. I think it is basically made the headlines before the whole data set has come out, which is due to come out next week, or I think in early July. So I just want that question to clarify to all my viewers and listeners. What is dexamethasone? We know dexamethasone exists for a very long period of time, and I just wanted you to highlight in what patient group dexamethasone was used, and what are the sort of what should I say, the legal uses in case of COVID-19, because as you perhaps will be aware that people like hydroxychloroquine, which was in the middle of the pandemic, everybody was panicking and getting it. So I just want you to tell my listeners that what is actual recovery trial tells us about dexamethasone. So the recovery trial is a very, very innovative trial. It's called an open label adaptive randomized platform trial. So the randomization is open label, so we can see what the patients are randomized to. So when the recovery trial started in March, it got badged as an urgent public health study mid-March and recruited its first patient immediately on the 14th of March. And we started recruiting our first patients around the 25th, 26th of March in Bradford. Initially, it had only 5 arms in it. So one was standard of care, so patients got what they were treating. Second arm was dexamethasone. We were using an antiretroviral drug used in HIV or AIDS, and we were using an antibiotic. And then we were using this popular anti-malarial drug, which gets so much of headlines in America and of course, in India and Pakistan as well, that hydroxychloroquine was thought to be a magic cure to prevent people from getting COVID-19. So what happened during that time? We were seeing, and I'm sure Dr. Aziz will tell you this as well, we were seeing a lot of patients who were actually recovering from when they were having the dexamethasone arm, and we've had some immense successful stories. In fact, we had a patient last week on BBC who had been on the dexamethasone arm, survived within a week. So dexamethasone is a steroid. It's basically used in a variety of inflammatory conditions. It's used very often in people who develop raised pressure within the circulation of the brain, or when there's compression of the spinal cord. And it's an anti-inflammatory drug. It reduces the pressure, reduces what we call edema in these patients. And it's also used in many other conditions like rheumatic conditions where the joints are affected. Now, dexamethasone we included in that study because we found that the other steroids might have caused a lot of side effects, and dexamethasone, in spite of being potent, did not cause so much of side effects of suppression of the immune system. Because the disease in COVID-19 is initially the virus, but then it alters what we call an immunogenicity, that the immune system starts working overdrive, trying to kill our own body. So dexamethasone is a very potent inhibitor of that immune dysregulation, we call it. And we were seeing lots of early patients who were recovering on dexamethasone. In our own population, as I told, more than 140 patients, over 30 patients received dexamethasone, and 27 of them survived that disease, which is staggering. And the statistics show that if dexamethasone was used right from the beginning, between 4,000 and 5,000 lives could have been saved in the UK. That's staggering, really. Even single life, I think even a single life would have mattered. So dexamethasone became quite a headline, and most of us who were taking part in recruiting into the recovery trial knew that dexamethasone will come as a winner, and we were quite right with that. What I must emphasize to your patients is dexamethasone is useful only in patients who require oxygen.
and above, or they are on a ventilator. Just because you have COVID symptoms, you should not take dexamethasone. Because, very important to note for your listeners, if you have COVID symptoms and you don't have any respiratory difficulties or breathing difficulties and you don't need oxygen, dexamethasone can work in a negative way. So it may, in fact, harm you. So dexamethasone should be prescribed only by a professional who knows when to prescribe it. It should not be taken from a pharmacy. If you're living outside the UK, please don't go to a pharmacy and buy dexamethasone and start taking it the day you get a sore throat. It will harm you. It should be taken only under strict medical advice when a consultant who knows about COVID prescribes it. Because in the recovery trial, over 2,000 patients were randomized to dexamethasone arm, and they compared it to people who had no treatment or standard of care, 4,000 patients. And they found that the maximum benefit was in people who were receiving oxygen therapy. So if you were on oxygen therapy, that way you needed a bit of breathing problems and your oxygen was not enough in your body, they give you oxygen which is either given through your nose or in the face of a form of a face mask. And in patients who needed ventilation, either a tube to connect it to a ventilator or people requiring CPAP or mask on their face, in those patients, the effect was staggering. So in patients who required oxygen, the 1 in 5 patients, we could avoid death. And in patients who required ventilation, 1 in 3 patients survived. So that is staggering. Remember, this is, as I've told you in the initial talk, this is not going to be the only magic or what I call the silver bullet in COVID-19. We're going to have more and more drugs, and we are researching all the time. Today, I've been on a call. We are looking at another prospective agent. So as we go on in our conversation, I can give you more insight into that. But with regards to dexamethasone, it has to be given and prescribed under medical advice. Please do not go and buy it in a pharmacy or request somebody to prescribe dexamethasone, because only a doctor can understand who will benefit from dexamethasone. Thank you very much, Dr. Sarala. And I think this is an extremely important message which I wanted to get to my listeners about that. So I will get back to you with further we will move this conversation further. I will go to Dr. Aziz now. डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपने कोविड की पीक के अंदर कोविड वार्ड में आप काम कर रहे थे और आज भी आप कोविड वार्ड को लुक आफ्टर करते हैं, तो ये जो डिज़ीज़ है ये कैसे आपके नज़दीक ये कैसे इवॉल्व हो रही है, कैसे चेंज हो रही है, इसमें अभी तक जो भी हमने देखा है उसमें आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? हाँ जी, शुक्रिया डॉक्टर गिलानी हमें मौका देने का अपने प्रोग्राम पे, ताकि हम अपने कोविड एक्सपीरियंस को शेयर कर सकें लिसनर्स के साथ। तो जब यूके में कोविड का जो पैंडेमिक था, जब अपने पीक पे था अप्रैल में, तो अंदाजे के मुताबिक रोज़ाना 1 लाख लोगों को यूके में इन्फेक्शन हो रहा था, और हम सबको पता है कि वेल अबव 1000 डेथ्स हो रही थी रोज़ाना। तो हम ब्रैडफोर्ड में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ब्रैडफोर्ड में भी इन्फेक्शन रेट हाई है। वहाँ पे एक बड़ी बेम पॉपुलेशन है आपकी तरह वोल्वरहैम्पटन में, जो ज़्यादा हाई रिस्क पॉपुलेशन है। तो हमारे हॉस्पिटल में वेल ओवर 100 पेशेंट्स थे वार्ड्स में जिनको कोविड था, और ज़्यादातर ये पेशेंट्स थे जिनको रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट था। तो बहुत तेज़ी से और बहुत ज़्यादा डेथ्स हो रही थी, जो एक बड़ी परेशानी और तशवीश वाली बात थी हमारे लिए। हर दिन जब हम वार्ड पे जाते थे, हमारे सामने पेशेंट्स को या इंटेंसिव केयर भेजना पड़ रहा था हमें, या कुछ पेशेंट्स ऐसे थे जिनको पैलिएटिव केयर पे डालते थे और उनकी डेथ्स हो रही थी। तो गवर्नमेंट ने यूके में 23 मार्च को लॉकडाउन किया था, बड़ा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया था। उसका ये फ़ायदा हुआ है कि सोशल डिस्टेंसिंग और जो दूसरे मेजर्स थे उनकी वजह से हमने देखा है कि हमारा इन्फेक्शन रेट और डेथ रेट बहुत नीचे गया है। अभी जो इन्फेक्शन रेट है मोस्ट रिसेंट वो तकरीबन 1000 केसेस पर डे है, और डेथ रेट जो है वो तकरीबन अराउंड अबाउट 100 केसेस पर डे है। ब्रैडफोर्ड में हमने देखा कि इन्फेक्शन रेट कम हुआ है और डेथ रेट कम हुआ है, लेकिन हमने उतना इन्फेक्शन रेट कम नहीं देखा जितना होना चाहिए था। अभी भी हमारे हॉस्पिटल में एटलीस्ट 50 पेशेंट्स हैं कोविड के हर टाइम, जो मोस्टली जो कोविड रेड वार्ड्स पे हैं। इंटेंसिव केयर में तकरीबन 10 के करीब पेशेंट्स हैं। तो यॉर्कशायर में भी अगर आप देखें तो ब्रैडफोर्ड में रिलेटिवली ज़्यादा पेशेंट्स हैं, और हमारा ये ख्याल है कि जो बेम पॉपुलेशन है वो इसमें एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि ये हाई रिस्क ग्रुप है। जब पैंडेमिक शुरू हुआ था तो ये हमारे लिए एक बिल्कुल नई डिजीज़ थी, हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो हम बड़ा एंक्शियस फील कर रहे थे कि हम इसको कैसे मैनेज करेंगे।
تو اٹلی سے ہمیں رپورٹس آئی تھیں کہ یہ بڑی ایک سیریس بیماری ہے, ڈیتھ ریٹس بہت ہو رہے تھے. تو این ایچ ایس نے ایک بڑا اچھا رسپونڈ کیا, اور این ایچ ایس کی پلاننگ بہت اچھی تھی, بہت زبردست تھی. تو ہر ہاسپٹل میں کووڈ وارڈز بنائے گئے یو کے میں, اور کووڈ روٹاز بنائے گئے ڈاکٹرز کے, اور انٹینسو کیئر میں جو کیپیسٹی تھی اس کو 2 یا 3 گنا کیا تاکہ ہم پینڈیمک اور کرائسس کے ساتھ ڈیل کر سکیں. ہم نے پچھلے 3 سے 4 مہینے, میں نے ڈاکٹر سارا لایا اور ہمارے دوسرے کنسلٹنٹ کولیگز ہیں, ہم نے مسلسل یہ کووڈ کے پیشنٹس کی لک آفٹر کی ہے پچھلے 3-4 مہینوں سے, جس سے ہمارا ایکسپیرینس اور کانفیڈنس زیادہ ہوا ہے. تو پہلے بھی اور اب بھی جو کووڈ کے پیشنٹس ہیں, مینلی ٹریٹمنٹ جو تھی اور اب ہے وہ سپورٹو ٹریٹمنٹ ہے. جو پیشنٹس ہاسپٹل میں آتے ہیں, موسٹلی پیشنٹس کو بریدنگ ڈفیکلٹی ہوتی ہے, کووڈ نیمونیا ہوتا ہے, تو ہم ان کو آکسیجن تھراپی دیتے ہیں کہ اگر ان کی آکسیجن سیچوریشن بلو 94% ہے, نارمل سیچوریشن 96% اور ابو ہیں. تو جن لوگوں کا سانس زیادہ خراب تھا, ہم ان کو نان انویزو وینٹیلیشن سی پاپ پہ ڈالتے تھے. تو اس کا بھی آپ نے کافی سنا ہوگا. سی پاپ تھراپی جو ہے یہ ایک ٹائٹ ماسک فیس پہ لگایا جاتا ہے جو آکسیجن جو ایئر لنگس کے اندر بلو کرتا ہے, جس سے پیشنٹ کی آکسیجن لیول امپروو ہوتا ہے. اور بریڈ فوڈ میں ہم نے کوائٹ ارلی آن سی پاپ شروع کیا پیشنٹس میں, اور ہمارا خیال ہے کہ اس کی وجہ سے ہم نے پیشنٹس کو انٹیوبیشن آئی سی یو جانے سے روکا ہے. جو پیشنٹس سیویئر ریسپریٹری فیلئر میں ہوتے ہیں اور سی پاپ بھی کام نہیں کرتا, ان کو انفارچونیٹلی انٹیوبیٹ کرنا پڑتا ہے, اور ہم نے بھی پیشنٹس کو انٹیوبیٹ کیا ہے. اور کووڈ کے جو پیشنٹس ہم نے انٹیوبیٹ کیے ہیں ان کا جو سروائیول تھا تقریباً 40-45% تھا. تو اس بیماری کو جب ہم نے ڈیل کرنا شروع کیا, ہم نے نوٹ کیا اس میں بلڈ کلوٹس لنگس میں, جس کو ہم پلمنری ایمبولزم کہتے ہیں, اس کا انسیڈنس بہت زیادہ تھا. تو شروع میں کوئی 1-2 ہفتوں کے بعد پھر ہم نے بلڈ تھننگ میڈیکیشن پیشنٹس کو دینا شروع کی تاکہ اس سے ان کی ڈیتھ نہ ہو. دوسرا اس میں یہ ہے کہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کڈنی فیلئر بہت پیشنٹس میں ہوا, کیونکہ ایک پیشنٹ جب 40 یا 50 بریتھس کے ریٹ پہ سانس لیتا ہے تو اس کا جو ہے لنگ سے انسینسبل فلوئڈ لاس بہت زیادہ ہوتا ہے. تو ہم نے ان کو انٹراوینس فلوئڈس دینا شروع کیے. سب سے امپورٹنٹ جو اسپیکٹ تھا وہ مینجمنٹ کا, وہ تھا کلینکل ٹرائلز میں ریکروٹمنٹ کا. تو ہم نے پیشنٹس کو یہ ڈاکٹر سرالہ کی سربراہی میں یہ ریکوری ٹرائل میں ہم ریکروٹ کر رہے تھے پیشنٹس بریڈ فورڈ میں رائٹ فرام دی بگننگ, اور ہم نے پیشنٹس کو انکریج کیا اس میں آپ حصہ لیں, کیونکہ کوئی افیکٹو ٹریٹمنٹ نہیں تھی. اور اس ٹرائل نے یہ 16 جون کو جو اس کے پریلیمنری ریزلٹس پبلش ہوئے ہیں, تو اس نے ثابت کیا ہے کہ جو ڈیکسامیتھاسون جن پیشنٹس کو ملا تھا ان میں ایک واضح بینیفٹ تھا, اور ان میں جو ڈیتھ ریٹ یا mortality ہے وہ ایک بڑی سگنیفیکنٹ ریڈکشن ہوئی ہے. اور 1/3 آئی سی یو کے پیشنٹس میں mortality ریڈیوس ہوئی ہے, 1/5 وارڈ پیشنٹس پہ جو آکسیجن پہ تھے. اور یہ ایک میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ایک ویری ایک سگنیفیکنٹ اچیومنٹ تھی جو یو کے سائنٹسٹ اور یو کے جو کلینیشنز تھے انہوں نے اچیو کیا. اور یہ ایک لینڈ مارک اور ایک گراؤنڈ بریکنگ ایک ٹرائل تھا. اس میں ابھی یہ ٹرائل آن گوئنگ ہے. اس میں ایزیتھرومائسن اینٹی بایوٹک کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے, ایک وائرل ڈرگ کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے, آپ نے سنی ہوگی ڈرگ ٹوسیلیزوماب انجیکٹیبل, اس کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے. جی اور ویری ریسنٹلی ہم نے براڈفورڈ میں یہ کنوالسنٹ پلازما جو ہے, جو کووڈ پیشنٹس کا جو پلازما ہے جس میں اینٹی باڈیز ہیں, اس کو ٹیسٹ کرنا شروع کیا ہے. اور ہمارے پاس ڈیکسامیتھاسون ہے, یہ بڑی ایک افیکٹو ڈرگ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ابھی بھی ہمیں مزید ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے تاکہ ہم ان کو فیوچر میں کمبائن کر سکیں, تاکہ اس کنڈیشن کی جو mortality یا ڈیتھ ریٹ ہے اس کو ہم مزید کم کر سکیں. تو اگر میں اس کو سمرائز کروں کہ بیماری کی شدت میں کمی آئی ہے, گورنمنٹ یو کے میں جو لاک ڈاؤن میجرز تھے اور پبلک نے بڑا ایک اچھا اور رسپانسبل بیہیویئر شو کیا سوشل ڈسٹینسنگ کی, جس کی وجہ سے بیماری میں انفیکشن ریٹ میں ڈیتھ ریٹ میں یو کے میں ایک بیماری کی جو شدت ہے اس میں کمی آئی ہے. لیکن یاد رکھنا بہت ضروری ہے, یہ بیماری ختم نہیں ہوئی, اور ابھی سوشل ڈسٹینسنگ وغیرہ اس کو ریلیکس کیا جا رہا ہے, اور اس سے انفیکشن کا ریٹ زیادہ ہو سکتا ہے. تو
ट्रीटमेंट्स जो हैं उनमें शुरू में हमारे पास कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है। आज 3 महीने के बाद हमारे पास एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट है और ये जब रिजल्ट्स आए थे 16 ऑफ जून को, तो विद इन मिनट्स और आवर्स ये पूरी दुनिया में एक बात फैल गई थी कि ये स्टेरॉइड्स जो हैं वो सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पेशेंट्स के लिए इफेक्टिव हैं जी और ये एक यूके में स्टैंडर्ड ऑफ केयर बन चुका है। जी, बातचीत का हम लोग सिलसिला जारी रखेंगे। मुझे एक ब्रेक लेनी है, मैं ब्रेक पे जाऊंगा, उसके बाद हम लोग वापस आएंगे। कुछ क्वेश्चंस मुझे ऑलरेडी रिसीव हो रहे हैं टेक्स्ट मैसेजेस के ज़रिए, जिसमें कन्वालेसेंट प्लाज्मा के बारे में काफ़ी सवाल पूछे जा रहे हैं। तो जैसे हम ब्रेक्स पे वापस आएंगे तो उसके बारे में फिर हम बातचीत दोबारा यहीं से शुरू करेंगे। तो लिसनर्स प्लीज़ स्टे ट्यून विद अस, वी आर गोइंग ऑन अ शॉर्ट ब्रेक एंड विल बी बैक सून। Without any break. I'm just sort of logged into the Facebook Live to make sure our voices are not carried on, and they are not, so we can talk. Rizwan, will you send me your Facebook link? It will be recorded, I presume. We can watch it later. Sure. I think we just wait for the break. I'll send you. Okay. Bismillahirrahmanirrahim, everybody. Welcome back to the program Health Clinic with Dr. Gillani. And today we have got
two guests with us talking about COVID 19 discovery trial use of dexamethasone, and we are going to talk about at risk population as well as what futures hold for us. So we got Dr. Dinesh Saralai, who is a respiratory consultant with a special interest in research, and he's the head of commercial research for Bradford Research Institute. And we have got Dr. Abid Aziz with us, who is a respiratory consultant lead at Bradford Royal Hospital and managed COVID ward throughout the pandemic and is managing it at present. So we were in conversation with them before we went on break. If you want to ask any questions, please send your questions in the form of text via a WhatsApp message. It is our number is 07440 If you are listening us on ramadanradiowolves.com, you will see a pop-up which says sends WhatsApp text, and you can just simply click on that and send us a question if you want to. Similarly, you can send us some voice memos if you want to ring in and ask questions from the experts. Our studio number is 01902 972 150. This program is going on in two languages, English and Urdu, and we are trying to get different perspectives of the two experts in the field. तो जो लोग हमारे साथ इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, अगर आपको कोई सवाल पूछना है व्हाट्सएप पे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं. हमारा नंबर है 07440420432. आपको ये नंबर फेसबुक लाइव पे भी मिलेगा और आपको ये नंबर हमारी वेबसाइट पे भी मिलेगा, जहाँ पे पॉपअप आएगा व्हाट्सएप टेक्स्ट का. आप उसको प्रेस करें तो आप हमें टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं. अगर आप हमें फ़ोन करना चाहें और हमारे एक्सपर्ट से कोई सवाल पूछना चाहें तो हमारा स्टूडियो का नंबर है 01902 972 150. वंस अगेन वेलकम टू माय गेस्ट. तो डॉक्टर अजीज़, ब्रेक पे जाने से पहले आप बात बता रहे थे कि कैसे कोविड चेंज हुआ, और इस पे बात हुई कि जो बेम पॉपुलेशन है वो एट रिस्क है. बहुत सारी न्यूज़ में हेडलाइंस आई हैं कि बेम पॉपुलेशन एट रिस्क पे है. तो मेरे लिसनर्स के लिए सबसे पहले आप अगर ये बता दें कि ये बेम पॉपुलेशन में क्या काउंट होता है, और बेम के अलावा और कौन से ऐसे रिस्क्स हैं जो कि आपको ज़्यादा वल्नरेबल बनाते हैं कि आपको कोविड अगर हो गया तो आपका कोविड ख़राब होने का ख़तरा है. तो उस पर आप ज़रा प्लीज़ बताइएगा. जी, जब ये कोविड स्टार्ट हुआ था, हम सुन रहे थे कि ये एक फ्लू जैसी बीमारी है और ये बूढ़े लोगों को और जिनमें कोमोबिडिटीज या दूसरी बीमारियां उनको अफेक्ट करेगी और यंग लोग इससे महफूज हैं. तो हमने ये देखा ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है. इस बीमारी ने हर एज के एडल्ट्स को अफेक्ट किया है. हमने पेशेंट्स देखे हैं 17 इयर्स ओल्ड, 18 इयर्स ओल्ड, 20s, 30s, 40s में, 50 इयर्स से नीचे बहुत हमने लोग देखे हैं. इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आप ओल्ड हैं और अगर आप में कोमोबिडिटीज या दूसरी बीमारियां, आपका रिस्क ज़्यादा है. लेकिन हमने ब्रैडफोर्ड में बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं जिनकी एज बिलो द एज ऑफ 50 है, और बहुत सारे हमने ये बेम पॉपुलेशन के लोग देखे हैं. ब्रैडफोर्ड में एक बड़ी एशियन पॉपुलेशन है आपके वोल्वरहैम्पटन की तरह, और हमने ऐसे लोग देखे हैं जो कहते थे ये फिट एंड वेल हैं, लेकिन वो सीवियर डिजीज के साथ उन्होंने प्रेजेंट किया, कोविड निमोनिया, लंग इन्वॉल्वमेंट के साथ. तो हमने ये देखा है कि जो, और ये वेल नोन है, ये मीडिया में भी आया कि जो बेम पॉपुलेशन, जो ब्लैक और एशियन लोग हैं, इनमें सीरियस कॉम्प्लिकेशंस या डेथ रेट है उसका 2 to 3 times इंक्रीज रिस्क है. अनफॉर्चुनेटली जो हेल्थ केयर वर्कर्स की डेथ हुई है यूके में, तकरीबन 200 हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं उनमें मेजॉरिटी जो हैं वो बेम डॉक्टर्स, नर्सेज और हेल्थ केयर वर्कर थे. दूसरा हमने ये देखा है कि कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं कि ओबेसिटी जिन लोगों में थी, या डायबिटीज, या हाई ब्लड प्रेशर, या अंडरलाइंग लंग डिजीज थी, उनमें आउटकम सिवियर थे. अगर किसी फिट एंड हेल्थी आदमी को सिवियर डिजीज हुई है, उसके बचने के चांसेस ज़्यादा थे जिसमें कोविड निमोनिया था. लेकिन जिनमें अंडरलाइंग ओबेसिटी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन था, उनमें आउटकम्स वर्स थे और उनमें डेथ रेट ज़्यादा हमने देखा है. हमने ये भी देखा है कि जिन लोगों में ओबेसिटी थी, कुछ लोग कहते थे उनको कोई और बीमारी नहीं थी, लेकिन हमने हॉस्पिटल में उनको डायबिटीज डायग्नोज किया है, उनका हीमोग्लोबिन A1C हमने चेक किया और पता चला कि ये डायबिटिक्स थे जो अनडायग्नोज थे. तो इसमें
दूसरा हमने ये देखा है पिछले कुछ हफ्तों में ब्रैडफोर्ड में कि हमारी जो फीमेल्स में ख़ास तौर पे जो यंग एशियन फीमेल्स हैं उनमें हमने बीमारी का ट्रेंड ज़्यादा देखा है। तो रिसेंटली एक दिन हमारे एक हफ्ता हमारे वार्ड पे ऐसा था कि हमारा जो कोविड रेड वार्ड है वार्ड 31 उसमें मोस्टली पेशेंट्स फीमेल थी और ज़्यादातर एशियन फीमेल एशियन पेशेंट्स थी जो तकरीबन 30s या 40s की एज ग्रुप में थी। तो रिसेंटली मैं एक वीकेंड पे ऑन कॉल था तो दो यंग फीमेल्स से मेरा वास्ता पड़ा जो 30s में थी और एक फीमेल जो थी उसमें कोई पहले बीमारी नहीं थी और इतनी सीवियर डिजीज थी और इतना सीवियर रेस्पिरेटरी फेलियर हुआ दोनों पेशेंट्स को इंट्यूबेट करना पड़ा और इंटेंसिव केयर पे उनको मैनेज करना पड़ा। तो इस बीमारी से कोई भी महफूज नहीं है। अगर आप यंग हैं फिट एंड हेल्थी हैं तंदुरुस्त हैं तो हो सकता है कि अगर आपको सीवियर डिजीज हो आपके लंग्स में चली जाए तो आपके बचने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन यूके में बहुत सारी डेथ्स हुई और पूरी दुनिया में बहुत सारी डेथ्स हुई हैं जो लोग अबव द एज ऑफ 20 जो पहले उनको कोई बीमारी नहीं थी। लेकिन ज़्यादा बड़े रिस्क फैक्टर्स वो हैं वो एज है मेल सेक्स है अगर आपको कोई और पहले से बीमारी है और अगर आपका बेन बैकग्राउंड है। तो ये जो मोटापे के बारे में आजकल हम लोग सुन रहे हैं कि ये भी एक रिस्क फैक्टर है, इसके बारे में आपका क्या कहना? हाँ जी, मोटापे के साथ ये देखिए ना हमारी अब पॉपुलेशन ओबेसिटी जो है वो एक बहुत ज़्यादा है हमारी जो वेस्टर्न पॉपुलेशन है यूएसए में यूनाइटेड किंगडम में। तो हमें पता है कि अगर आप में ओबेसिटी है तो आप में दूसरी बीमारियों का ज़्यादा खतरा है। जो ओबेसिटी का डायरेक्ट लिंक है डायबिटीज़ टाइप 2 डायबिटीज़ के साथ उन लोगों में इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। और अगर आप बेम पॉपुलेशन को देखें इनमें भी ओबेसिटी रिलेटिवली ज़्यादा है और इनमें अब्डोमिनल ओबेसिटी ज़्यादा है जो डायबिटीज़ का एक रिस्क फैक्टर है। अगर आप में ओबेसिटी है तो वो सारी बीमारियां उससे स्टेम होती हैं डायबिटीज़ हाइपरटेंशन कार्डियोवास्कुलर डिजीज बल्कि कैंसर भी एक रिस्क ओबेसिटी कैंसर्स के लिए भी एक रिस्क फैक्टर है। तो दूसरा मैं ये भी कहूँगा कि अगर हमारी जो बेम पॉपुलेशन है इसमें एक नेचुरल रिस्क फैक्टर्स हैं कि इनमें अब्डोमिनल फैट ज़्यादा है या डायबिटीज़ या कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का इंसिडेंस ज़्यादा है। तो हमें हमारी जो बेम पॉपुलेशन है उसको ऐसे मेजर्स लेना चाहिए कि रिस्क को कम किया जाए और इसका रिस्क को ऐसे ही कम किया जा सकता है कि आप अपनी डाइट को मॉडिफाई करें और एक्सरसाइज मस्ट है। तो हमें वाइट पॉपुलेशन से ज़्यादा रिस्क है बेम पॉपुलेशन का और हमें चाहिए कि हम एक्स्ट्रा मेजर्स लें ताकि उस रिस्क को हम कम कर सकें। और इस वायरस ने हमको बता दिया है कि इस वायरस ने डिस्क्रिमिनेट नहीं किया किसी को इसने माफ़ नहीं किया और जो लोग ओबीस थे अनफॉर्चुनेटली वो इसका ज़्यादा शिकार हुए जो लोग डायबिटिक्स थे उनका और इस ये हमारे लिए एक वेक अप कॉल है। ये पैंडेमिक तो अल्टीमेटली खत्म हो जाएगा लेकिन लोगों को समझना चाहिए कि ये ओबेसिटी जो है ये एक किलर डिजीज है और इससे सारी बीमारियां स्टेम होती हैं और ये हमारे लिए एक अभी एक लेसन है हम सब के लिए कि ओबेसिटी को कर्ब किया जाए। पब्लिक हेल्थ मेजर्स हैं उनको हेल्थ प्रमोशन एक्सरसाइज एजुकेशन। बहुत शुक्रिया। हम इसी तरह गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। मैं वापस जाता हूँ डॉक्टर सारलाह की तरफ। डॉक्टर सारलाह, द क्वेश्चंस व्हिच आई एम गेटिंग, आई थिंक मोस्ट ऑफ दीज क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम Pakistan and possibly from India as well. Uh, and I can see the reason the people are asking us these questions. They are asking, you are talking about BAME risk. How does that risk translate when we all are Southeast Asian in these countries? Uh, so I think if you sort of briefly touch on this BAME population risk and different risk factors, and then try to address this for my listeners, which are actually in Southeast Asia. I think this is a vital question which we are trying to answer. And we have to use some of the data which initially came from America and the data which we have in this country. So Dr. Aziz very eloquently put that he was seeing a lot of ladies from the South Asian community admitted. Now, there are certain predictive factors to increase risk, and it will be useful for your listeners to know this. If your age above the age of 65, if you have a body mass index, that is, you are on the overweight, and Dr. Aziz mentioned that, about 35. Now,
that those two are independent risk factors irrespective of where you come from. If you then add Black and Asian race, so we've done some calculations. When compared to the standard white population, the Black community is 4 times more at risk of dying from COVID-19. Among the South Asian population, very interestingly, the Pakistani population was twice as at risk of developing severe COVID-19 and at risk of death. The Indians were about 1.6%. The Bangladeshis were higher than the Indians at 1.9, 1.7. The Chinese, very interestingly, behaved very much like the white population. So even though the virus originated from China, maybe some of the figures which came out of China we may not believe. It's hard to believe that they had less deaths. But it may be true that the virus didn't attack them as much. And certainly in our own experience, there have been certain predictors of death in COVID-19. So apart from the factors that I've just told you now, if you have chronic kidney disease or acute kidney disease, you seem to do very badly. And that's because the clearance of your kidney of toxic chemicals from our body seem to aggravate the COVID-19. So when you have kidney failure, most people will develop an increased accumulation of urea and other toxic substances within our body, and they seem to accelerate the harmful effects of COVID-19. You then have people with coexisting respiratory or heart conditions, and lastly, diabetes. Diabetes is very interesting, and Dr. Aziz touched upon this. Now we are all dependent on regulating the blood glucose in our body by a hormone called insulin, which is produced by our pancreas. And COVID-19, through some of its complex interactions with the receptors, can destroy the very cells in our body which produce insulin. So we have seen a lot of patients having a new onset of diagnosis of diabetes, but also having previous existing diabetes getting worse and poorly controlled. So it's very important here to mention to your viewers, and healthy lifestyle is going to keep you out of this. But more importantly, I know the numbers are going up in the Indian subcontinent, much to the sadness of us, because they're probably about 6 or 8 weeks behind the West, and the numbers are going up every day across the Indian subcontinent. So the precautions that people need to take at this time is listen to the medical advice, the public health advice, wearing masks, keeping them isolated, protecting. My important message at this point is to protect your near and dear ones, protect the vulnerable people, because your actions can harm others within your house. And to also seek medical advice as soon as you develop any symptoms, not to self-medicate, because in our part of the countries where we come from, medicines are available over the counter. And it's important to listen to medical advice and take the right treatment. But also not to panic, but there's a sense of calmness in this, because if you observe the common measures which in that part of the world would be advised by your own medical bodies and the WHO, you would reduce the risk of catching the virus. And especially listen to the lockdown rules, because individual health authorities in your areas will know what they're doing very well. But also follow, because we in the scientific community and clinical community are striving over time to find a cure for COVID-19. And there are only 2 ways we'll get out of this, Dr. Gillani. One is a curative strategy. So we find a cure for COVID-19. So when patients like the ones which Dr. Aziz describes, we have treatment, they get better, just like having a pneumonia, and they go home. People don't die of pneumonia, very rarely. Only 1 in 10, 15 people die of pneumonia. Whereas here, many people are dying. So we want to produce a cure of 2 or 3 drugs, which will, when they come into hospital, we get them better, they go home. And then we are working on a prevention strategy. Prevention will be a vaccine. And the Indian subcontinent will receive large doses of that vaccine when we find the vaccine. But that's probably later on in your questioning. But I think in the meantime is to listen to the advice, follow, and when you get onset of symptoms is to seek appropriate medical help. Thank you very much. Very comprehensive response. Thank you for that. I will come back to you with the questions around convalescent plasma. I'll go to Dr. Aziz. तो डॉक्टर अजीज़ आप एक तो मेरे लिसनर्स को ये बताइएगा कि ये जो डेक्सामेथासोन है ये किस को लेनी है और किस को नहीं लेनी, और इसके नुकसानात हैं अगर, तो वो क्या नुकसानात हैं? जी,
डेक्सामेथासोन एक स्टेरॉयड है जो पिछले 50 ईयर से अवेलेबल है और ये एक एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है रूमेटॉइड अर्थराइटिस अल्सरेटिव कोलाइटिस क्रोन्स डिजीज अस्थमा जैसी डिजीजेस को हम ट्रीट करते हैं स्टेरॉयड से तो कोविड में ये है कि जो रिकवरी ट्रायल हुआ था उसमें हमने जो पेशेंट्स पॉजिटिव थे कोरोना वायरस के और जो हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे और उनको रेस्पिरेटरी सिम्टम्स थे हमने उनको डेक्सामेथासोन दिया 6 मिलीग्राम्स एवरी डे फॉर 10 days और अप टू द डे ऑफ डिस्चार्ज तो हॉस्पिटल में हमने वाज़ेह तौर पे देखा था इसका फ़ायदा था और ये साबित भी हो चुका है इसके रिजल्ट्स में तो 3 ग्रुप्स थे पेशेंट्स के एक पेशेंट ग्रुप था जो जिनको रेस्पिरेटरी सिम्टम थे और उनको कोई ज़्यादा सांस की तकलीफ नहीं थी या उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं थी एक ग्रुप था जिनके सैचुरेशन 94% से नीचे थे और हम उनको ऑक्सीजन दे रहे थे और एक ग्रुप था जो ऑक्सीजन के बावजूद उनको नॉन इन्वेजिव इन्वेजिव वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ी थी तो ट्रायल में ये साबित हुआ है कि जो ग्रुप था ऑक्सीजन थेरेपी पे उनमें 1/5 रिडक्शन हुआ है मोर्टालिटी में जो लोग वेंटिलेशन किसी फॉर्म ऑफ वेंटिलेशन पे थे उनमें 1/3 रिडक्शन हुआ मोर्टालिटी में लेकिन जो लोग ऑक्सीजन या वेंटिलेशन पे नहीं थे उनमें कोई फायदा नहीं हुआ और उनमें पोटेंशियल नुकसान है इसलिए यूके में फॉर्चुनेटली ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब होती है आप ओवर द काउंटर नहीं ले सकते स्टेरॉइड्स लेकिन बहुत सारी कंट्रीज हैं जिसमें आप प्रेडनिसलोन डेल्टा कोर्टल इसको कहते हैं उन कंट्रीज में या डेक्सामेथासोन डेकाड्रॉन के नाम से आती है यू कैन बाय ओवर द काउंटर लेकिन ये एक हार्मफुल स्ट्रेटजी है और ये स्ट्रिक्ट मेडिकल सुपरविजन के साथ लेनी चाहिए स्टेरॉइड्स अगर आप यूज़ करें इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं ये एक इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग है और अगर आप किसी पेशेंट का इम्यून सिस्टम गैर ज़रूरी तौर पे आप सप्रेस करेंगे उसमें इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा है दूसरा ये भी है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसके बड़े साइड इफेक्ट्स हैं ऑस्टियोपोरोसिस है थिनिंग ऑफ द बोन्स है कैटरेक्ट्स है डायबिटीज है हाई ब्लड प्रेशर है और बहुत सारे इसके नुकसान हैं तो ये इम्पोर्टेंट है लिसनर्स के लिए कि अगर आप यूके में या यूके से बाहर अगर इसका यूज़ है तो ये एक कोविड एक्सपर्ट या एक रेस्पिरेटरी स्पेशलिस्ट जो है उसकी एडवाइस पे या जो एक स्पेशलिस्ट कोविड को समझता है उसकी एडवाइस पे सिर्फ लेना चाहिए वैसे नहीं लेना चाहिए प्रीमेच्योर यूज इसका जी बहुत शुक्रिया बहुत ही अहम मैसेज है जो कि हमारे लिसनर्स को सुनना चाहिए गौर से अगर आप डेक्सामेथासोन का इस्तेमाल ठीक तरीके से और सही पेशेंट में नहीं करते तो उसके नुकसानात भी हो सकते हैं और यही मैसेज जो हमारे एक्सपर्ट्स आपको दे रहे हैं कमिंग बैक टू डॉक्टर सारा लायक convalescent plasma treatment is extremely popular in subcontinent at present and I was sort of looking through that and there are very few very small studies and it is said that there are about 47 or 48 studies which are in progress around convalescent plasma. What I know about it is that we have used convalescent plasma treatment for other conditions for a very long period of time, and obviously we don't have much sort of information about COVID-19. I think all our information and understanding is about 6 months old because this is the age of the disease. So, can you sort of tell us a little bit more about what is convalescent plasma treatment and what we are hoping to achieve via various trials in COVID-19 and use of convalescent plasma? So, Dr. Gillani, the one to go to understand why convalescent plasma works is to go back and see what COVID-19 does to our body. So, COVID-19 is caused by a coronavirus, and this coronavirus is like a mothball with many spikes on it. Now, these spikes help the virus to attach itself when it's breathed by us into our body, goes into our lung, through the airways, and it binds to the lining of our airways. When it binds into the lining of the airways, one of the mechanisms which help it bind so well is these spikes which we see on the surface of the coronavirus. And these spikes then implant a certain genetic material from the virus into the body. Now, that stage of the illness is basically we count it as 3 stages. So you have the exposure to the virus between 0 to 3 days, -3 days, and then from the first day of contact to seventh day,
the virus starts causing the effect. We don't have many symptoms. Maybe some of us lose our smell. We get a slight headache, a body ache, not many symptoms. Then, from day 7 onwards, this virus, when it implants the RNA and causes its harmful effect, the body perceives this as in a very abnormal way and starts producing antibodies, which are very harmful for us. They are not good antibodies, they are bad antibodies. So these so it causes an altered immune response within our body, and the body starts developing damage. One of the first damages that we see, our lungs are made up of millions of air sacs. Imagine if you go wash your car, you buy a sponge, don't you? So the lung is like a sponge, and each of those smile or holes within that sponge is like an air sac. These air sacs get filled with fluid, and the air sacs are not able to take the oxygen which we are breathing. So the commonest problem which people have with COVID-19 is this lack of oxygen, and we call it in medical terms hypoxia. And people are very happy with it. And in the Western world, we have called it happy hypoxia. So people have lack of oxygen. And many of you might have seen videos emerging from Iran in March, people sitting there with very low oxygen levels, but they're still talking to people. But that's because there is a damage going on in the lung. So the body is filled with an altered immune response. So there is a proportion of us, and this was initially led to believe, and I'm in my own estimate, about 50% of us, half of us who have COVID may not experience many symptoms or very minimal symptoms, we get better. But at the same time, we produce antibodies. So antibodies are proteins which are produced within our body. And these antibodies protect that individual from the coronavirus from attacking or causing any problems. These antibodies, what they do is go and coat the virus or even prevent some of the dysregulation, the abnormal regulation of the immune system within our body. So, as you mentioned, convalescent plasma is used in many other conditions. In fact, plasma therapy is widely used in many degenerative and what we call demyelinative disorders. So, this is only an hypothesis, and I think your viewers need to treat this very, very carefully. Again, convalescent plasma is probably beneficial, in my opinion, to the severe category of patients. So these are not to be given for people who have got coronavirus, a bit of fever, sitting at home, and then you have convalescent plasma. We are devising, each stage we want to devise medicines. So if somebody has mild disease, we give something else. Convalescent plasma, in my opinion, is likely to benefit people who have severe coronavirus disease, who, as Dr. Aziz has previously said, are on oxygen, CPAP, or ventilation. What it does to those people, it reduces the inflammation in the lung. These antibodies go within the human body and produce good antibodies within our body, get rid of the inflammatory response that we have, the abnormal inflammatory response, and help the body recover. They don't cure you from the virus. What they do is help heal the body by reducing this altered, it's in fact stopping that process where the body is behaving very abnormally, trying to kill its own cells. And that's what it's doing. That is what we call the altered immunogenicity. So what do? We take the blood from people who have recovered from COVID-19. We separate the blood cells from the plasma, which is the fluid component of the blood, which contains the antibodies. And we donate it, we infuse it like a blood transfusion for these people. And what we're doing in the recovery trial is using 2 doses of convalescent plasma on day 1 and day 2. So 1 dose on day 1, the second dose on day 2. And very important, again, this is very important, we are using the convalescent plasma of 2 separate donors so that we get a variety of antibodies. So we are taking the plasma from one donor with a separate batch number, taking the plasma from another donor and infusing it to the same patient, of course, of the same blood group. So there is a lot of complex process in that. There needs to be training. So we have to take a blood sample, 2 separate blood samples from the COVID patient, match it against the plasma of the donor, make sure it is safe, and then it is given. Again, I have to emphasize, convalescent plasma administration needs to be given only in experienced centers, not to be just given anywhere in small hospitals. It has to be given by people who have experience in giving blood transfusion, know the side effects of blood transfusion, because this is like a blood transfusion. It can produce reactions. People can get poorly.
So they have to be closely monitored. So that plasma is slowly put into the vein of a patient, and we monitor their blood pressure, temperature, and we then keep them on the conventional coronavirus treatment. What do we want to see? The effect of plasma can take between 7 and 10 days. You're not going to give the plasma today and tomorrow out, I'm going home. Doesn't work like that. So the body has to take in this plasma. Of course, the plasma that is given into the body has only a finite life. It doesn't survive for long. But during that process, when it survives in the body, it stimulates the body to produce good mechanisms to get rid of the inflammation within our body. And we will see the effect of this plasma therapy probably between the 5th to the 10th day after giving the treatment. Excellent. Thank you very much. I think it was very enlightening for not only my listeners and viewers, but I think I have learned a lot from that as well. Thank you very much for that. I'm going to Dr. Aziz. आपके लिए 3-4 सवाल आए हैं जिसमें उन्होंने लिखा है कि हमें डॉक्टर अजीज़ से सवालों के जवाब उर्दू में पता करके दें, तो मैं वो सवाल आपसे पूछता हूँ। लेकिन उन सवालों से पहले मैं आपसे कहूँगा कि आप भी जो ये कन्वालेसेंट प्लाज्मा, शायद आपके इल्म में होगा, पाकिस्तान में भी आजकल बहुत ज़्यादा कन्वालेसेंट प्लाज्मा का ट्रेंड चला हुआ है, डोनर्स ढूंढे जा रहे हैं। तो आप ब्रीफली बताइएगा कि कन्वालेसेंट प्लाज्मा जो है ये किन लोगों को देना चाहिए और इसके साथ क्या क्या नुकसानात भी हो सकते हैं। कोरोना वायरस का इन्फेक्शन जिन पेशेंट्स को होता है उनमें एंटीबॉडीज जो स्पेशल प्रोटीन्स हैं वो ब्लड में प्रोड्यूस होती हैं, और समझा जाता है कि जितना सीवियर किसी को इन्फेक्शन हो उनका एंटीबॉडी लेवल या एंटीबॉडी टीटर उतना ही ज़्यादा होता है। तो यूके में पहली स्टेज में ये हुआ कि 1000 जो डोनर्स हैं उन्होंने अपना प्लाज्मा डोनेट किया है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जब ये क्राइसिस शुरू हुआ था, ये पूरी दुनिया में ये बात फैली हुई थी कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन आप ले लें और इससे फ़ायदा होगा, और एक मिथ था और लोग यूज़ कर रहे थे इसका ओवर द काउंटर यूज़। लेकिन अमेरिका से जो स्टडीज़ आई हैं और जो ये रिकवरी ट्रायल में जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन आर्म है उसमें प्रूव हो चुका है कि ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन एक फ़ायदेमंद ट्रीटमेंट नहीं थी, बल्कि इसके कुछ नुकसान थे। अब ये जो कन्वालेसेंट प्लाज्मा है रिकवरी ट्रायल में रिसेंटली हमने शुरू किया, जो जिस तरह डॉक्टर सारा ने बताया सीवियर डिजीज़ के लिए, तो मुझे ये भी पता है कि मैंने सुना है जो सब कॉन्टिनेंट है वहाँ पे जो किसी को सीवियर डिजीज़ है उनको वहाँ पे कन्वालेसेंट प्लाज्मा भी दे रहे हैं, टोसिलिजुमाब भी दे रहे हैं, रेमडेसिविर भी दे रहे हैं। लेकिन ये एक कन्वालेसेंट प्लाज्मा को अगर आप देखें, ये हमारा ख्याल है कि ये हाइपोथेसिस है कि ये काम करेगी सीवियर कोविड पेशेंट्स के लिए, लेकिन अभी तक ये प्रूवन नहीं है। जो रिकवरी ट्रायल ने साबित किया है कि अगर आप पेशेंट्स को रैंडमाइज करें क्लिनिकल ट्रायल्स में, तो आपके पास फिर एक क्लास ए या टॉप लेवल का एक एविडेंस आपको हासिल होगा। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन सक्सेसफुल नहीं थी, डेक्सामेथासोन सक्सेसफुल था। तो कन्वालेसेंट प्लाज्मा का इस्तेमाल हो रहा है, अभी हमें ये नहीं पता कि ये डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। दूसरा, यूके में तो बड़े स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया हैं, अगर आप किसी को कन्वालेसेंट प्लाज्मा दें तो वो जो डोनर्स हैं उनको चेक किया जाता है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV। मुझे नहीं पता कि ये सब कॉन्टिनेंट में ये कितने स्ट्रिंजेंट मेजर्स है वहाँ पे, क्योंकि अगर आप देखें पाकिस्तान में देखें हेपेटाइटिस सी का इंसिडेंस, इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड अलोंग विद इटली। तो अगर आप पेशेंट्स को दे रहे हैं और प्रॉपर स्क्रीनिंग नहीं की तो आपको ये ब्लड बॉर्न वायरसेस फैल सकते हैं। दूसरा ये है कि ये ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस हो सकते हैं पेशेंट्स की डेथ होती है ट्रांसफ्यूजन से। इसलिए इसको अगेन अगर देना है आइडियली क्लिनिकल ट्रायल्स के कॉन्टेक्स्ट में देना चाहिए, स्पेशलिस्ट सेंटर्स में सुपरवाइज्ड। और उसके अलावा इसका अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप एक रिस्क ले रहे हैं और इसका एक एविडेंस प्रूवन नहीं है, और हम यही कहेंगे कि क्लिनिकल ट्रायल्स के कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज़ करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है कुछ ये सवाल जो हैं ये शायद हमारे कुछ GP कॉलीग्स भी हैं जिन्होंने सवाल पूछे हैं। एंटीजन टेस्ट यूके में हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसकी पॉजिटिविटी के बारे में, उसकी सेंसिटिविटी के बारे में सवाल है कि
کیا کرنا چاہیے, کب سب سے زیادہ سینسٹیو ہوتا ہے اور کیوں نگیٹو آ سکتا ہے, اور ساتھ میں پوچھا ہے کہ اب چونکہ بہت زیادہ ایمفسس ہے ایک دم سے اینٹی باڈیز کے اوپر, تو اینٹی باڈیز کروائیں تو کیوں کروائیں اور اس کا کیا فائدہ؟ جی اپنے سواب ٹیسٹ کا پوچھا تھا نا کوشچن جی جو ہے. جی جی تو obviously ہماری ٹیسٹنگ کیپیسٹی کافی زیادہ ہے یو کے میں, تو یہ وائرل ایک تھروٹ سواب لیا جاتا ہے کہ پہلے وہ تھروٹ میں وہ سواب لیا جاتا ہے, پھر اس نوز کے اندر. تو جن پیشنٹس کو یہ کرونا وائرس انفیکشن ہے, جب وہ انکیوبیشن پیریڈ کے بعد ایکٹیو ڈیزیز اسٹیج میں جاتے ہیں, تو ان میں چانسز ہیں کہ آپ یہ پی سی آر ٹیکنیک یوز کی جاتی ہے, جس میں جو وائرس کا اس وائرس میں کافی جو اس کا آر این اے کا اسٹرکچر ہے, جینیٹک مٹیریل ہے, اس میں تقریباً 26,000 to 32 اس میں بیس پیئرز ہیں. تو سواب جب ہم لیتے ہیں, اس کے جو آر این اے اس کو ایمپلیفائی کیا جاتا ہے پی سی آر یا پولیمریز چین ریئیکشن کے ساتھ. تو ہم ہوپ کرتے ہیں کہ وائرس کا جو ہم جینیٹک مٹیریل حاصل کریں گے اور اس کا ڈائگنوزس کریں گے. تو ہمیں پتہ ہے کہ جو پی سی آر ٹیکنیک ہے تھروٹ سواب کی یا نوز سواب کی, وہ 70% سینسٹیو ہے. اس کا مطلب ہے 70% آف کیسز آپ کے ڈیٹیکٹ ہو جائیں گے, لیکن 30% آف کیسز آپ کے بیماری ہونے کے باوجود ڈیٹیکٹ نہیں ہوں گے. تو اس کو ہم فالس نیگیٹو کہتے ہیں. انکیوبیشن پیریڈ کے بھی جو آخری 1 یا 2 دن ہیں, اس میں بھی جو وائرس آپ کے اپر ریسپریٹری ٹریکٹ میں شیڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہاسپٹل میں ہمارے پاس یہ فیسلٹی ہے, اگر ہمیں کوئی بہت زیادہ کلینکل سسپیشن ہے تو ہم اس کا دوبارہ ریپیٹ کر لیتے ہیں ٹیسٹ پیشنٹ کا, تو جس میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ پازیٹیو آ جائے گا. کچھ ہمارے پیشنٹس ایسے بھی ہیں کہ 2-3 ہمارے پیشنٹس براڈفورڈ میں ایسے بھی تھے کہ ہمیں بہت زیادہ شک تھا کلینکلی اور ریڈیولوجیکلی ان کے ایکس رے یا سی ٹی اسکین کی بیسس کے پیشنٹ کو کووڈ ہے, لیکن ان کے 3 جو تھروٹ سواب وائرل پی سی آر کے نیگیٹو آئے ہیں. تو یہ 100% ٹیسٹ نہیں ہے, اچھا ٹیسٹ ہے, اس کا ریزلٹ 24-48 آورس میں آ جاتا ہے. یہ یو کے میں پبلک کے لیے اویلیبل ہے, ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کے لیے اویلیبل ہے. اس کے کچھ ڈاؤن سائڈس بھی ہیں. ایک جب وائرس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے باڈی میں, پیشنٹ ریکور ہو جاتا ہے, تو یہ بھی ٹرینڈ ہے یو کے میں بھی ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا یہ دوبارہ پیشنٹ کا سواب کریں, دیکھنے کے لیے ہم پیشنٹ کو ڈسچارج کر سکتے ہیں یا نہیں نرسنگ ہوم, یا اس کو کوئی کینسر ٹریٹمنٹ یا کیموتھراپی ہم دے سکتے ہیں یا نہیں. تو اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ جن پیشنٹس کا ہم نے سواب کیا ہے, اپ ٹو 30-35 ڈیز بھی پیشنٹ کا سواب وہ پازیٹیو ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ وائرس ابھی زندہ ہے, اس کا یہ مطلب ہے کہ وائرل آر این اے وہ بھی باڈی میں فلوٹ کر رہا ہے, آپ کے اپر ریسپریٹری ٹریکٹ میں, آپ کے جی آئی سسٹم میں, اسٹولز میں بھی پازیٹیو آ جاتا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پیشنٹ کو ایکٹیو ڈیزیز ہے. تو اس لیے یہ مس لیڈنگ بھی ہو سکتا ہے, اور کریکٹ پیشنٹ کے لیے اور کریکٹ ٹائم پہ کرنا چاہیے. اینٹی باڈی ٹیسٹنگ جو ہے یہ ایک بڑا کمپلیکس ٹاپک ہے, اس کو میں تھوڑا سا سمپلیفائی کر کے پیش کرتا ہوں. جب وائرس باڈی میں انٹر ہوتا ہے اور ڈیزیز انکیوبیشن پیریڈ ہوتا ہے, جس میں وائرس ابھی وہ ملٹیپلائی یا ریپلیکیٹ کر رہا ہوتا ہے, اس کے بعد ایکٹیو ڈیزیز ہوتی ہے, تو ہماری باڈی میں اینٹی باڈیز پروڈیوس ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اینٹی باڈیز کیا ہیں؟ یہ اسپیشل پروٹینز ہیں جو ہمارے بی لیمفوسائٹس, جو ایک وائٹ سیلز کی ٹائپ ہے, وہ پروڈیوس کرتے ہیں. تو جب وائرس باڈی میں جاتا ہے تو امیڈیٹلی امیونوگلوبولن ایم جو ہے آئی جی ایم اینٹی باڈیز پروڈیوس ہونا شروع ہوتی ہیں, اور وہ تقریباً 2 ہفتے تک پروڈیوس ہوتی رہتی ہیں. جب وائرس باڈی میں انٹر ہوتا ہے تقریباً 1 ہفتے کے بعد امیونوگلوبولن جی یا آئی جی جی پروڈیوس ہونا شروع ہوتی ہے, اور وہ آئی جی جی کی پروڈکشن جو اگلے 4 سے 5 ہفتے تک چلتی رہتی ہے. ہمارا یہ خیال ہے کہ جتنا سیویئر انفیکشن پیشنٹ کو ہوگا, اتنا زیادہ ان کا اینٹی باڈی رسپانس ہوگا, اینٹی باڈی لیول اتنا زیادہ ہوگا. تو اگر آپ نے کسی کو ڈائگنوز کرنا ہے تو آپ وائرل تھروٹ سواب کریں گے پی سی آر کے لیے. اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ کسی کو انفیکشن ہوا ہے پاسٹ میں, تو آپ اس کا اینٹی باڈی ٹیسٹ کریں گے. یو کے ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ نے یہ بھی ریسنٹلی رول آؤٹ کیا ہے ٹیسٹ ہیلتھ کے پروفیشنلز کے لیے. تو اس کے فائدے بھی ہیں اور کچھ نقصانات بھی ہیں. اس کا فائدہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے, آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو انفیکشن ہوا ہے, اور اگر آپ نے ایپیڈیمیولوجیکل پرپزز کے لیے اس کو بڑا اچھا ہے, جس کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے یو کے میں
या कहीं पे भी डिजीज का कंट्रोल या स्प्रेड देखना है, तो अगर आप के पास फैसिलिटी है कि आप पूरी पॉपुलेशन का टेस्ट कर दें, तो आप बता सकते हैं कि ये इतने % लोगों को कोरोना वायरस हुआ था। इसका नुकसान ये है कि ये लोगों को एक फॉल्स रीएश्योरेंस दे रहा है कि उनको इन्फेक्शन हो चुका है, अब उनमें इम्यूनिटी है, अब उनमें खतरा नहीं है। पहले तो हमें ये नहीं पता कि पेशेंट्स में डेफिनेटली इम्यूनिटी है या नहीं है। हमने ये देखा है कि जो कोरोना वायरसेस हैं, जो कॉमन कोल्ड करते हैं, तो उनमें जब एंटीबॉडीज बनती हैं, वो फ्रॉम 3 to 11 मंथ्स तक वो एंटीबॉडीज आपके ब्लड में रहते हैं। जब ये 2002 में सार्स वायरस आया था चाइना में, एंटीबॉडी टेस्टिंग जब की थी उन पेशेंट्स की, वो 2 years तक एंटीबॉडीज थी। लेकिन ये कोविड-19 का जो वायरस है, हमें ये नहीं पता कि जो एंटीबॉडीज जो प्रोड्यूस हो रही हैं, ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही हैं और ये कितनी देर के लिए प्रोवाइड कर रही हैं। जिस पेशेंट को हुआ है और अगर उसका एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव है, अगर उसको फॉल्स रीएश्योरेंस होता है कि वो दोबारा उसको इन्फेक्शन नहीं होगा और वो जो सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरे मेजर्स को अडॉप्ट नहीं करता, ना सिर्फ उसको नुकसान हो सकता है, बल्कि वो दूसरे लोगों के लिए भी एक बुरी मिसाल कायम करेगा। जब वो प्रिकॉशंस नहीं लेगा, दूसरे लोग भी समझेंगे हमें प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए कोई भी जो टेस्ट है वो 100% नहीं है। टेस्ट से हमें बड़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन टेस्ट्स मिसलीडिंग भी हो सकते हैं। तो इनको अगेन राइट पेशेंट्स में करना चाहिए और इसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो करेक्ट होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ रहिएगा। मैं अगला सवाल जो है वो डॉक्टर सारालाई के लिए। डॉक्टर सारालाई, द क्वेश्चंस व्हिच आई एम गेटिंग ऑन माय स्क्रीन, they are asking for your opinion, I think. We have talked about facts so far. They are saying we are not adhering to the social distancing measures. We have seen some reports around the beaches and how the people has gathered, uh, and the people are worried. The people say that there are various questions saying who's responsible for spreading this disease, and uh, what about my parents? Uh, what do you think is going to happen if we will continue the way we are behaving? So it is about predicting what could potentially go wrong. I think it's in line with what Prof. Witty's tweet was this morning as well. What do you think will be the consequence if we are not adhering to social distancing measures? I think I can split this into two aspects. I'm going to talk as a scientist and then what the politicians are thinking. If you follow the science of coronavirus and COVID-19, I don't think we are out of this as yet. I think we are not even out of the first wave. The R number, which is quoted, is the rate of transmission. In some areas, is still above 1. It really, if you look at South Korea, which has been only the successful country, and then Germany, they had an R factor which was less than 0.2, which means that if one person got coronavirus, his chance of spreading it was very, very low, 20%. Whereas when we started the pandemic, one coronavirus patient was spreading it to 4 patients. The R factor was 4. Now, if you then go back, the government has got the politicians and the political people need the economy going. See, so you got to balance what the science advice as well as what the politicians got to do, because you can't just shut a country forever. So if you look very carefully, it's up to people who interpret this the own way they want. If you look there in the Prime Minister briefing, he's still telling us to be very careful. The scientific advisor, Professor Vitti, told us in his press briefing last week, earlier this week, that we are still not out of it. There is no guarantee we won't have a second peak, and people still need to take care in maintaining social distancing and not crowding public places. Now, you've left a population who have been under lockdown for 3 months. The weather, a lethal combination, and the pictures that you saw in Bournemouth yesterday, Southampton. In fact, one of my colleagues who was on a research call in Southampton was out after our call was going to a radio program and a TV program to warn the public that we were still having cases and we were still the research community. And to be honest, I have to tell your listeners, the medical profession as a whole, so everybody in hospital, has made huge sacrifices in this.
You should have listened. Nearly 200 people belonging to the healthcare sector have died. People from our own BAME community. It has not spread. Dr. Aziz said, this virus does not know any race, religion, creed, caste, whatever. It has affected everybody, but it has affected certain vulnerable people for no fault of theirs. Now, my own feeling, and I had a program with Dr. Aziz in our local radio station because we've last earlier this week, because we're not seeing a decrease in cases in Bradford. And so we appeal to the public that they need to keep under caution because if we are going to see a reduction in cases, because I think the implications of this, I think your listeners will also want to hear, is what happens to patients who have non-COVID disease. We have not seen patients coming to our A&Es. We have not been doing outpatients clinics since March. So all the patients with other illnesses, cancers, heart disease, diabetes, cardiovascular disease, they're not simply coming to hospital because they're scared that they will get COVID-19. And that includes our own population who are not the healthiest. So people have to listen to the government, but treat very responsibly because especially if you have elderly people in our own houses, which we have, we need to take ultra caution because we can be spreading the virus to them. And I think it's a message for your younger listeners as well, because many of the younger listeners think that they are superhuman and they're not going to get this. Dare I say, as Dr. Aziz mentioned, we have seen patients from all age groups. Our youngest patient treated in our unit was 18, fit, school going student with no medical conditions, ended up nearly on a ventilator. So the younger lot are not prone to this. And if they get mild illness, they could be transmitting the virus to other members of their family with very little symptoms. So it's very important they take the same precautions as the elderly people. And I understand the public has made also huge sacrifices in this. People have not lost jobs, they've lost professions. But unfortunately, this is something which we see in a generation. We have to beat this because we have to get back to normality. But until that so-called normal is, we've got to be a bit patient for the scientific community and the medical profession to find a cure and then ultimately a prevention. Because we have beaten many diseases, measles, polio, uh, smallpox, all diseases which were killing in our parents' generation have now virtually been eradicated. So we will find a cure for this. It's a question of time, but we've got to be patient. Thank you very much. That was a very balanced opinion you have given, and hopefully my listeners would have draw some of the conclusions out of that. I think I'm just moving to Dr. Aziz again. Dr. Aziz, 3-4 सवाल हैं जो मैं इकट्ठे करके पूछता हूँ. इसमें एक सवाल उन्होंने पूछा है कि मेरी वालदा को कोरोना वायरस हुआ है और उनको दमे की शिकायत भी थी. अब वो ठीक हो गई हैं और उनको अस्पताल नहीं जाना पड़ा. इसी तरह एक और सवाल है कि उनके जानने वाले जो हैं वो ITU में गए थे, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से वो ठीक हो के वापस आ गए हैं. और एक सवाल है कि मेरी उम्र 36 साल है और मुझे 10 दिन बहुत बुरी तरह से सिम्टम हुए हैं. और सब के सब सवाल ये पूछ रहे हैं कि इसका मेरे चेस्ट पे लॉन्ग टर्म में क्या इफ़ेक्ट होगा या हमें अब क्या करना है आगे. जी ये तीनों ही जो केसेस हैं बड़े फॉर्चुनेट हैं, ये सर्वाइव कर गए हैं क्योंकि इसका आउटकम डिफरेंट भी हो सकता था. बड़े सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते थे. अब ये कोरोना वायरस अपने साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स लेके आया है. ये हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, ये सोशल प्रॉब्लम्स हैं, मेंटल हेल्थ है, बाकी इकोनॉमी है. लेकिन अगर हम इसके हेल्थ हैजर्ड्स को देखें कि पहले तो जिस पेशेंट को इन्फेक्शन होता है, सीवियर इन्फेक्शन, और जब हम पेशेंट से पूछते हैं वो ये नहीं है कि ये 1 हफ्ते या 2 हफ्ते या 3 हफ्ते बाद इंसान नॉर्मल है. कुछ लोगों को 3-3 महीने हो गए इन्फेक्शन हुआ था, अभी भी इनके एक्स एंड पेन्स हो रहे हैं. लोगों का सेंस ऑफ स्मेल जा चुका है, लोगों को ब्रीदिंग डिफिकल्टीज हैं. तो अगर हमारे यूके में तकरीबन 43,000 डेथ्स हुई हैं और अगर हम उसको एक्सट्रापोलेट करें तो अंदाज़ा ये किया जाता है प्रोबेबली कोई another 80,000 पीपल जो इनको सीवियर लंग डिजीज हुई है जो बच गए हैं. अब अंदाज़ा ये किया जाता है जिन लोगों को कोविड निमोनिया हुआ है, लंग इन्वॉल्वमेंट हुई है, सीवियर डिजीज हुई है, उनमें से 20 to 30% ऑफ जो पेशेंट्स हैं उनको क्रोनिक लंग डिजीज होगी. अनफॉर्चुनेटली पल्मोनरी फाइब्रोसिस या लंग स्कारिंग की वजह से है.
تو ایک لگتا ہے کہ یہ ایک نئی جو لنگس میں اگر فائبروسس ہو یا اسکارنگ ہو، ہم اس کو انٹرسٹیشل لنگ ڈیزیز کہتے ہیں میڈیکل ٹرمز میں. تو لگتا ہے کہ یہ پینڈیمک کی وجہ سے اب ایک نئی اینٹی شامل ہو جائے گی میڈیکل لٹریچر میں، جو انٹرسٹیشل لنگ ڈیزیز، اس کو کہیں گے کووڈ انٹرسٹیشل لنگ ڈیزیز. تو ایک اس کووڈ نیمونیا کی یہ خاصیت ہے کہ اگر آپ کو سمپل بیکٹیریل کمیونٹی کوائڈ نیمونیا ہو، وہ اکثر ایک لوگ کو افیکٹ کرتا ہے. جو کووڈ نیمونیا یہ ملٹیپل لوگ، سارے لوگ کو افیکٹ کرتا ہے اور لنگس وائٹ ہو جاتے ہیں مسٹ کی طرح. تو امید ہے کہ کافی سارے جو پیشنٹس ہیں وہ اچھی ان میں ریکوری ہوگی اور ہیلنگ ہو جائے گی. لیکن لگتا ہے کہ 1/5 جو ہے پیشنٹس جو ہیں یا 1/4 آف پیشنٹس میں ہے یہ پرماننٹ لنگ ڈیمیج ہوگا، اور ان میں سمپٹمس آف بریتھلیسنس، کاف یا فٹیگ ہوگا. اور یہ یو کے وائڈ پروگرام ہے جو ہماری برٹش تھوراسک سوسائٹی ہے، اس نے کہا ان پیشنٹس کو فالو اپ کریں ریسپریٹری ٹیمز یا کووڈ ٹیمز. تو ہمارا ارادہ ہے کہ ہم ان پیشنٹس کو 3 منتھس پہ فالو اپ کریں گے، ان کو کلینکس میں بلائیں گے، کووڈ کلینکس میں ان کا ہم چیسٹ ایکس رے کریں گے، ان کا ایک بیسک بریدنگ ٹیسٹ کریں گے جس کو اسپائرومیٹری کرتے ہیں. اور اگر وہ ٹیسٹ اب نارمل ہوئے، کلینکل اسیسمنٹ کریں گے پیشنٹ کا، اس کی آکسیجن سیچوریشن چیک کریں گے. پھر ہم مزید ٹیسٹ کریں گے جس طرح فل پلمنری فنکشن ٹیسٹ، سی ٹی اسکیننگ. دوسرا یہ بھی ایک بڑی پازیٹیو چیز ہے کہ یو کے میں جو اس نے لیڈ لیے کلینکل ٹرائلز میں، کووڈ کلینکل ٹرائلز میں دنیا میں، ابھی ارادہ ہے جو لیسٹر گروپ ہے، انہوں نے ڈاکٹر سارا لائے سے کل پرسوں رابطہ کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم یو کے میں جو کووڈ جن لوگوں کو ہوا ہے اور ان کا ریسپریٹری فالو اپ کرنا ہے، تو وہ بھی ایک ریسرچ کی صورت میں ایک بڑا کیا کہتے ہیں کہ ایک بڑا کمپریہنسو طریقے سے کرنے کا ارادہ ہے. تو یہ یو کے مختلف جو ہاسپٹلس ہیں ان کو اپرچونٹی ملے گی کہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں، اس ریسرچ پروجیکٹ میں ان پیشنٹس کو فالو اپ کریں، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ کووڈ نے جو لنگس میں جو ڈیمیج کیا ہے یا پلمنری فائبروسس کیا ہے، کہ اس کا لانگ ٹرم ایفیکٹس کیا ہیں پیشنٹس کے اوپر اور پیشنٹس کے کوالٹی آف لائف پہ اور جو اوور آل ہیلتھ سروس کے اوپر. جی بہت شکریہ. اب ہم لوگ جو ہے وہ آلموسٹ اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں. ڈاکٹر دنیش سارالائے, آئی personally want to thank you for your very valuable time. I think it was a very, very informative talk which you have given. Thank you very much on behalf of my listeners and viewers. I got about 30 seconds for you for any closing remarks. So I think my closing remarks is this pandemic is not over as yet. Be alert as possible. The medical community is found one of the cures for COVID-19, not as yet. There's still a long way to go. We are striving very hard to find a vaccine to get rid of this crisis. But more importantly, look after your near and dear ones. Follow the government advice. Stick to the social distancing measures. And we will definitely find a cure and come out of this very successfully. Thank you very much. That was a message of hope, and we are grateful for all the efforts you are putting in, and thank you for being part of the show. ڈاکٹر عابد عزیز, آپ کا بہت زیادہ شکریہ, آپ نے اپنے بہت قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا. آپ ہمارے لسنرز کے لیے کچھ آخری پیغام اس پروگرام کے حوالے سے دینا چاہیں؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک سیریس بیماری ہے، فیٹل بیماری ہے، بڑی کنٹیجیس اور پھیلنے والی بیماری ہے. یو کے میں بہت بیماری انفیکشن ریٹ بڑی ہائی تھا، ڈیتھس بہت زیادہ ہوئی ہیں. گورنمنٹ کے جو میجرز تھے وہ بڑے اچھے تھے، ان کو امپلیمنٹ کیا 23 مارچ کو، اور پبلک نے میجورٹی آف جو پبلک ہے اس نے بڑا رسپانسبلی بھی بیہیو کیا ہے، اور ہم آر ویلیو کو تقریباً 1 پہ لے آئے ہیں. ڈیتھ ریٹس کم ہو گئی ہیں لیکن یہ بیماری ختم نہیں ہوئی. پبلک سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کی ایڈوائس جو ہے وہ اس کو اسٹرکٹلی فالو کریں. ابھی ہماری لائف نارمل نہیں ہوگی، کافی دیر کے لیے ریسٹرکشنز رہیں گی. ہم اپنے ریلیٹیوز یا دوستوں کو ایسے نہیں مل سکتے جس طرح پہلے مل رہے تھے. ہماری ہالیڈیز پہ ریسٹرکشنز ہے، لائف پہ ریسٹرکشن ہے، لیکن یہ ہمارا فائدہ اس میں. اگر ہم پریکاشنز نہیں لیں گے انفیکشن ریٹ زیادہ ہو جائے گا.
تو یہ کوئی بھی پیشنٹ اس سے افیکٹ ہو پبلک کا ممبر افیکٹ ہو سکتا ہے جی بہت اور بہت جو شکریہ درست آپ. ہیں وہ درست ہیں وہ جی بھی سیف نہیں. ہم لوگوں کا وقت اب ختم ہو گیا. اپنے دوستوں اپنے رشتہ داروں سب کا خیال رکھیے گا. اگلے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گا. اللہ حافظ. تھینک یو.